Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, today is the sixth lecture of unit number 1, citizenship. So my dear students, let's quickly refresh the knowledge. And before that, let's quickly look at the objective. So quickly look at the objective that today all the students will be able to identify fundamental human rights as stated by UN Charter. So my dear students, in the previous class, we have already discussed about the human rights के being human beings, इंसान होने के नाते हम सब के कुछ हकूक हैं और वो हकूक दुनिया के हर इंसान को हासिल है, चाहे वो जिस मुल्क से मर्जी ताल्लुक़ रखता हो, उसकी को जो भी रेस हो, वो कोई लैंग्वेज जोन सी मर्जी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, उसका कल्चर कोई भी है. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ दीज राइट्स और इनको कहते हैं फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. सो सम राइट्स आर स्टेटेड बाय यूएन चार्टर, यानी कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, उन्होंने कुछ जो राइट्स हैं उनको डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मौजूद हैं. आज हम वो राइट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, द स्किल्स दैट विल बी डेवलप्ड आर रिकग्निशन, अंडरस्टैंडिंग. So my dear students, let's quickly refresh the knowledge before we move on towards the lecture. Quickly answer, in your opinion, as a human being, what rights should be granted to everyone? So my dear students, before we start the lesson, आप ज़रा सोचें, बेशक आप वीडियो को पॉज करें और सोचें ज़रा, दिमाग पे जोर डालें कि इंसान होने की हैसियत से आपको क्या लगता है कि कौन कौन से राइट्स जो हैं, कौन कौन से हकूक इंसानों के पास होने चाहिए. वेरी गुड. एवरीवन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, एवरीवन मस्ट गेट एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच. इसके अलावा फ्रीडम टू लिव, आज़ादी से रहने का हक जो है वो भी हर इंसान के पास होना चाहिए. These are some basic human rights जो हर इंसान के पास ज़रूर होने चाहिए. Okay, now quickly answer, what are basic human rights? We have just discussed कि ये human rights जो हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताए, ये हर इंसान के पास होने चाहिए और इन्हीं को हम human rights कह के describe करते हैं या एक दूसरे को बताते हैं और उन पे अमल भी करते हैं. List some fundamental human rights. बर्थ राइट फ्रीडम, यानी कि आपके पास आज़ादी जो है वो पैदाइशी आपका हक है. इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, फूड, यानी कि जिन हकूक़ के ज़रिए आप आज़ादी से ज़िंदा रह सकते हैं, वो सब हकूक़ जो हैं वो दे आर कॉल्ड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. Okay, my dear students, let's quickly look at the Islamic perspective. Do not kill a soul which Allah has made sacred except through the ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. सो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी का बेजा कत्ल करना या किसी को बेजा सज़ा देना, यानी कि नाजायज़ नाहक जो है, वो एक बहुत ही बड़ा गुनाह है. अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप किसी को बिला वजह कत्ल नहीं कर सकते, उसकी जान नहीं ले सकते, लेकिन जो हकूक लॉज के अकॉर्डिंग अगर आप कोई सज़ा देंगे तो वो एक्सेप्टेबल है. अदरवाइज़ नाजायज़ किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी का कत्ल कर देना, वो बहुत ही सख्त बड़ा गुनाह है. Now let's quickly move towards a very fun activity. Let's celebrate Human Rights Day. तो अभी हम क्योंकि ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलें ज़रा ह्यूमन राइट्स के बारे में एक एक्टिविटी करते हैं. इस एक्टिविटी के लिए आपको जो मटीरियल रिक्वायर्ड sorry, the material which is required is paper or card paper, any art medium, paint, poster paints, pens, crayons, आप ये कोई भी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं. होल पंच मशीन, स्ट्रिंग और वूल. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको पेपर चाहिए या कार्ड पेपर चाहिए. इसके अलावा आप पेंसिल स्केच भी बना सकते हैं, आप पोस्टर पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हैं, मार्कर कलर्स यूज़ कर सकते हैं. इट्स अप टू यू, क्योंकि आपको एक ड्राइंग क्रिएट करनी है तो यू कैन यूज़ एनी आर्ट मीडियम. उसके अलावा आपको एक पंचर चाहिए ताकि आप एक होल कर सके पेपर के अंदर, अपनी ड्राइंग के अंदर. एंड अनदर थिंग विच इज़ नीडेड और रिक्वायर्ड इज़ स्ट्रिंग और वूल. आपको धागा चाहिए जिससे आप उसके अंदर डालकर
और उसको हैंगिंग बना सके उसकी. सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. व्हाट टू डू? अब आपको करना क्या है? ड्रॉ और डिजाइन अ पिक्चर ऑफ एनी राइट्स that you feel are important to you on your own piece of paper. You can use any art medium. अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कोई भी ड्राइंग अपने जहन में सोचें कि राइट्स जब आप डिस्कस करते हैं, मैंने आपको बहुत सारे राइट्स बताए हैं. आप एक स्कूल बना सकते हैं, उसमें आप बताएं कि बच्चे जो हैं वो लाइन वाइज जो हैं वो स्कूल के अंदर एंटर हो रहे हैं, बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू गेट एजुकेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह की पिक्चर्स बना सकते हैं. इसके अलावा आप हॉस्पिटल्स दिखा सकते हैं जहाँ से लोग सेहत याब होकर निकल रहे हैं, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ द राइट to get treated for their diseases, for their sicknesses. Similarly, आपको आप क्लीन वाटर बनाते हुए दिखा सकते हैं. तो आपको जो राइट्स आपको लगता है, आप कोई एक राइट लें और उसको पिक्टोरियल फॉर्म में आपने ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ योर आर्ट मीडियम, क्रेयॉन, पेंट्स एंड एनीथिंग. Next is, once your picture is complete, punch a hole into the corner of the picture. Now with the help, once you have done with the picture painting, आप अपनी painting बना चुके हैं, आपने अपनी paper के corner पे, for example this is your paper, आपने अपने paper के corner पे hole करना है with the help of the puncher. Use string or wool to connect them all together to form a wreath. Okay my dear students, इसके अलावा आपको क्या करना है? आपको string जो है वो उन holes में डालनी है सारी paintings के, और फिर आप जो है उनसे एक पूरा हैंगिंग बना सकते हैं और आप अपनी क्लास में डिस्प्ले कर सकते हैं. So my dear students, from here you can pause the video and you can continue making your drawing. But before that, let me show you some pictures which show human rights. This is a sign of UN, UNO जो है वो use करते हैं इसको as human rights के sign के तौर पे. This is also used as the sign of human rights. And this is also used as the sign of human rights. So you can also draw the signs used for showing the human rights. Okay, now pause the video and make your painting. I hope you have made some very colorful paintings and this will help you to decorate your class. और इसके बाद आप लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं वन बाय वन आप सबकी पेंटिंग देखें, एंड यू कैन लर्न अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट राइट्स. Okay, use this moment to discuss that every one of us has a special place in the society and that their picture represents that. Their picture is important to complete the chart and therefore their rights is also important to complete the society we live in. So my dear students, मैं असल में ये एक्टिविटी मैंने आपको इसलिए करवाई है ताकि आपको ये पता चले कि हर इंसान की बहुत अहमियत है, और जिस तरह आपको ये लगता है कि आपको ये हक हासिल होना चाहिए, इसी तरह हर इंसान को वो हक हासिल होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का हक है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक है, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का हक है, खाना खाने का हक है, साफ़ सुथरा खाना, साफ़ पानी, आज़ाद रहने का हक. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हकूक़ हर इंसान को हासिल होने चाहिए क्योंकि हर जान बहुत कीमती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज चार्टर? क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं यूएन चार्टर. सो व्हाट इज अ चार्टर? A document issued by a government that gives rights to a person or group. So my dear students, ऐसा document जो कि गवर्नमेंट से अटेस्टेड होता है, गवर्नमेंट जो है उसको पास करती है, उसको जो है हम चार्टर कहते हैं. तो जो यूनाइटेड नेशंस हैं उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पास किया है विच इज़ नोन एज फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के नाम से, और वो जो है पूरी दुनिया जो है उनके उसको जो है उसके ऊपर अमल करती है. Okay, my dear students, now quickly open page number 9 in your books. I hope everybody has opened page number 9 in their books. Now let's quickly start the reading. Human rights. Human rights are the rights that are universally accepted and protected by the state. So my dear students, what is universally means कि पूरी दुनिया में हर जगह, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला इंसान है, उसको ह्यूमन राइट्स जो है वो हासिल हैं क्योंकि वो इंसान है. दैट पर्सन इज अ ह्यूमन. तो उसको ह्यूमन होने के हैसियत से, इंसान होने की हैसियत से ये हकूक जो है वो हासिल हैं. These rights are enjoyed by every individual regardless of his race,
religion, gender और nationality. So my dear students, अब ये हकूक जो है ये हर इंसान को हासिल है, चाहे वो जिस मर्जी मजहब से ताल्लुक रखता हो, जिस मर्जी तबके से ताल्लुक रखता हो, चाहे उसका जो मर्जी स्किन कलर है, उसकी जैसी भी एज है, उसकी कोई भी जेंडर है, उसको ये हकूक हासिल है. The United Nations has declared some human rights as laws that are accepted worldwide. People enjoy them no matter who they are, where they belong to. So my dear students, United Nations जो है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट, एक जो लॉ है वो पास किया है जो कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के नाम से है और वो एज अ लॉ माना जाता है. लॉ ऐसी चीज होती है कि जिसकी अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप सजा के मुस्तहिक होंगे, आपको सजा दी जाएगी. तो दिस इज अ लॉ कि ये ह्यूमन राइट्स जो हैं वो दुनिया के हर कोने में फॉलो किए जाएंगे, चाहे आप जिस मर्जी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं. इवन इन पाकिस्तान वी फॉलो these human rights. Okay, now quickly come on page number 10. Human rights stated by United Nations. Now let's quickly have a look कि कौन-कौन से rights जो हैं वो United Nation ने पास किए हैं. Some of the fundamental human rights declared by United Nations are discussed below. All human beings are born free and equal in dignity and rights. तमाम इंसान जो हैं वो आज़ाद पैदा हुए हैं और उनकी rights और उनकी dignity जो है वो सब बराबर है. Everyone has equal rights without any discrimination of race, color, gender, language and religion. So my dear students, no matter from where you belong, you have same rights. Everyone has the right to life, liberty and safety. हर इंसान के पास जिंदा रहने का, आज़ाद रहने का और सेफ रहने का हक है. No one shall be held in slavery. किसी को भी बगैर वजह के पकड़ के नहीं रखा जा सकता या गुलाम नहीं बनाया जा सकता. बेसिकली ये गुलाम जो है वो किसी शख्स को भी आप नहीं बना सकते, चाहे वो सजा का ही मुस्तहिक क्यों ना हो. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all forms. Prohibited का मतलब है मना है. So slavery and slave trade. So my dear students, these two terms are extremely important. किसी को गुलाम बनाना और इसके अलावा गुलामों को ट्रेड करना, एक जगह से दूसरी जगह उनकी ट्रेडिंग करना, यानी कि उनका बिजनेस करना, ह्यूमन बिजनेस कहते हैं इसको, ये करना सख्त जो है प्रोहिबिटेड है, मना है. No one shall be subject to torture or punishment. किसी को भी जो है वो टॉर्चर या पनिशमेंट जो है वो नहीं दी जाएगी. No one shall be arrested forcefully or sent away from the country. अब किसी भी शख्स को जबरदस्ती बगैर उसके कंसेंट के जो है ना पकड़ा जाएगा, ना उसके मुल्क से दूर भेजा जा सकता है. Number 7, everyone has the right to reside where they want in their own country or abroad according to their wish. So my dear students, जो भी किसी भी शख्स के पास अपने मुल्क में रहने का, जहाँ पे भी वो चाहे, जिस प्रॉपर्टी पे चाहे वो उसको ख़रीद के वहाँ रह सकता है. इसके अलावा बाहर के मुल्क में अगर वो लीगली जाएंगे तो उनको वहाँ पे भी आज़ादी से रहने का हक है. Number 8, everyone has the right to belong to their country. No one shall be illegally deprived of his nationality. So my dear students, इस पॉइंट पे ये कहा जा रहा है कि हर इंसान के पास उसके मुल्क में रहने का हक है और उसके से ज़बरदस्ती उसकी शहरियत या उसके मुल्क की जो आइडेंटिटी है उसको नहीं छीना जा सकता. Number 9, everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. This right includes freedom to practice religion. So my dear students, हर इंसान के पास ये हक है कि आप उसको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का हक है, उसको अपनी बात कहने का हक है, उसको अपना कल्चर प्रैक्टिस करने का हक है और यही चीज़ें जो हैं आपको आज़ाद रहने का हक देती हैं. So my dear students, let's quickly move towards the wrap up. Every human being is granted some basic rights that no one can take. The United Nations has declared some human rights as laws accepted worldwide. It is known as UN Charter. So my dear students, here is the time for practice. Quickly look at the worksheet, free and equal.
ये वर्कशीट आपको आपकी टीचर प्रोवाइड करेंगी प्रिंट फॉर्म में. राइट डाउन योर नेम, डेट एंड योर क्लास. फ्री एंड इक्वल. आफ्टर क्लास ask 3 people, family, friends or neighbors, the following question. अब आपको ये सवालात जो हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने सिबलिंग्स से या अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने हैं. Which rights do we have today that we did not have few years back? What do you need to do to maintain that right? Are there any rights that you are not enjoying now that you want to have in the future? So my dear students, ये right, ये questions आपको discuss करने हैं और फिर आपको आंसर्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली लिखने हैं. So the homework for today is home activity number 4 given on page number 10. Discuss human rights stated by the United Nations with your parents. Write in your notebook any of the 2 rights you appreciate the most. So my dear students, आपको UN चार्टर जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है और फिर 2 राइट्स जो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद आए हैं और जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं वो जो है आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं. On page number 17, question number 1 will be done in your notebooks. Write any 2 fundamental human rights stated by UN Charter. कोई से 2 human rights, कोई से भी 2 आपको अपनी नोटबुक में स्टेट करने हैं. Okay, my dear students, in the next class, we will study and understand that all individuals have equal rights irrespective of religious and ethnic differences and learn to respect individual differences in opinion. So, my dear students, अब हम next class में जो है अभी हमने rights discuss किए हैं और next class में हम ये discuss करेंगे कि कैसे different लोग जो है उनकी different opinion होती है और कैसे हमें हर इंसान को जो है वो respect करना चाहिए. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day and Allah Hafiz.